we solve the exercise 5.1. Now in this video we will discuss about the exercise 5.2. In my previous video I told you the formula, the n term of an AP, an equals to a plus n minus 1 into d, where an equals to nth term, a equals to first term, n equals to number of term numbers, and d equals to common difference. In this formula we have four quantities: nth term, first term, term number, and common difference. If any three are given, we have to find out the fourth one. अगर इनमें से कोई सी थ्री गिवन है तो हम फोर्थ वाली क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. If in an AP, if we know the last term, and last term is noted by L, if we know the last term L, then formula is L equals to a plus n minus 1 into d. If we having a last term of AP, अगर हमारे पास AP का last term है, this formula becomes this. Clear? Now we solve the exercise. Question number 1. What is question number 1? Question number 1 is the fill in the blanks. A table is given. Here we have given A, D, N and AN. मैंने बताया 4 unknown quantities हैं उस फॉर्मूले में. We have given a 3 quantities. We have to find out the fourth one. 3 given है, हम फॉर्मूले में पुट करके फोर्थ वाले फाइंड आउट करेंगे. I will telling out the second part. In the second part, A is minus 18, n equals to 10, an equals to 0, and we have to find out d. Put the formula an equals to a plus n minus 1 into d. This is the formula to find out the n term. Put the value of a n and an. An is 0, so 0 equals to a. A is minus 18 plus n is 10, so 10 minus 1, and we have to find out d. We take 0 equals to minus 18 plus 9d. Minus 9d equals to minus 18. d equals to minus 18 upon minus 9. That is 2. So d equals to 2. Clear? The value of d is 2. We solve the remaining part. 3 quantities given है, फॉर्मूला में वैल्यू लगाएंगे and we have to find out the fourth one and complete the table. Now question number, we move to question number 2. Question number 2 is MCQ. I will tell you the second part. 11 term of a AP. We have to find out 11 term. AP is given minus 3, minus 1 upon 2, comma 2, dot dot dot. We have to find the 11 term. 11 term means we have to find out A11. Clear? We have to find out A11. So first term is A,
a equals to -3, d equals to, if this is a1, this is a2, this is a3, d equals to a2 minus a1 equals to -1/2 minus 3 equals to -1/2 plus 3. Taking 2 LCM, -1 plus 6, that is 5/2. That is D. We have to find out the 11 terms, so n equals to 11. We have to find out A11. So put in the formula an equals to a plus n minus 1 into d. Put the value of a, d and n. An, then a11 equals to, what is a? A is -3, a -3 plus n is 11, 11 minus 1 and d is 5/2. Solve. A11 equals to -3 plus 10 into 5/2. Cancel out, that is -3 plus 25, that is 22. So A11 is 22. It means option B is correct. Similarly, we solve the first part of question number 2. Now we move to question number 3. Question number 3. I will telling you the two part. First is the first part. First part is that AP is given and we have to find out the missing term. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, AP गिवन है, कुछ मिसिंग पार्ट है उस AP में, हमें उनको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट इज दैट 2, that is the missing part and that is 26. We know that first term of AP is A. So A equals to 2. This is A1, this is A2 and this is A3. Second term is missing. Second term missing है. We have given a first term and the third term. हमने बताया था थर्ड टर्म क्या होगा. थर्ड टर्म इक्वल्स टू 26. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो टर्म नंबर होगा उससे 1 लेस क्या होता है, डी. थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस हाउ मच डी इज, थर्ड टर्म इज 3, so 3 minus 1, a plus 2d equals to 26. That is equation number 1. That is equation number 2. Now from one end to be solved out. From one end to put the value of a from 1 in equation 2. Then a plus 2d equals to 26. Put the value of a. 2 plus 2d equals to 26. 2d equals to 26 minus 2. Therefore 2d equals to 24. d equals to 24/2. That is 12. Okay. d is 12. D12. We have to find out the second term. हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म. तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू ए. तो सभी टर्म में होता है a प्लस दिस इज द सेकेंड टर्म. सो हाउ मच डी इट हैव, जितना जौन सा टर्म होता है उसमें उससे 1 लेस डी होती है, एक कम डी होती है. सेकेंड टर्म है 2 minus 1, 1d यानी d. सेकेंड टर्म इज a plus d.
फाइंड आउट a is 2 प्लस हमने d की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी है 12, दैट इज 14। तो सेकंड टर्म क्या हुआ, सेकंड टर्म आया 14, मिसिंग टर्म क्या हो गया 14। सी फाइंड द कॉमन डिफरेंस 14 minus 2 12, 26 minus 14 12, common difference is same, it means our answer is correct. Now we move telling you the last part, fifth one. Fifth part. In the fifth part, what it is? First term is missing, then 38, then missing term, then missing term, then missing term, then 22. This is A1, A2, A3, A4, A5, A6. That AP consists of how many terms? 6 terms. इस AP में कितने टर्म है? 6 terms. First term is not given, second term is given, and sixth term is given. Second term equals to 38. And what is second term? A plus how much D? Only 1 D. तो कौन सा टर्म उससे कम D equals to 38. That is equation number 1, right? Now this is sixth term. So sixth term equals to 22. What is sixth term? A plus how much D? कितना D होंगे इसमें? 6 टर्म है तो उससे 1 कम 1 लेस 5D equals to 22. That is equation number 2. सीधा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को चेक करेंगे। बोथ आर द लीनियर इक्वेशन, दोनों कैसी हैं? लीनियर इक्वेशन। सीधा कोएफिशिएंट ऑफ A is 1. So if we subtract them, we find out A and D by solving. So subtract equation 1 from equation 2. We are solving by elimination method. A plus 5D equals to 22. A plus D equals to 38. If we subtract, change the sign, this is cancel out. Plus 5D minus D, 4D. 4D equals to, if we subtract it, this is 6 and 1 minus 16. Then D equals to minus 16 upon 4. That is minus 4. How much D? D is minus 4. Now put the value of D in equation 1 to find out A. Put the value of D in equation 1. What is equation 1? A plus D equals to 38. What is, we have to find out A. What is D? D is minus 4. Plus minus 4 equals to 38. A minus 4 equals to 38. A equals to 38 plus 4. Then A equals to 42. Now we are having a A and we are having a D. अब हमारे पास A है और D है, हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। We have to find out the first term. A1 equals to A equals to 42. फर्स्ट टर्म ही A होता है, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 42।
2. Now we have to find out third term, fourth term and fifth term. Now A3 third term is A3 equals to A plus 2D. जोन सा टर्म उससे 1 लेस D. Value of A is 42 plus value of D is minus 4 equals to 42 minus 8, that is 34. A3 is 34. A3 is 34. Now A4 में क्या हो जाएगा? A3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो A3 प्लस D equals to A3 is 34, D is minus 4 equals to 34 minus 4 equals to 30. A4 is 30. Now we find A5. A5 equals to A4 plus D. इस टर्म में अगर D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. Therefore is 30, D is minus 4. So 30 minus 4 equals to 26. That is 26. Now check. 38 minus 42 minus 4, 34 minus 38 minus 4, 30 minus 34 minus 4, 26 minus 30 minus 4, 22 minus 26 minus 4. Common difference is same, so our answer is correct. Clear? Now we find out question number 4. What is question number 4? Question number 4 is that which term of AP is given 3, 8, 13, 18 dot is 78. क्या कह रहा है? इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा? क्लियर? इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा? हमने मान लिया लेट nth term of AP is 78. हमने माना इसका n टर्म होगा 78. देन an इक्वल्स टू n टर्म क्या होगा 78, तो an इक्वल्स टू 78. a इक्वल्स टू 3. फर्स्ट टर्म इज a फर्स्ट टर्म ही तो है, तो a is 3. d is 8 minus 3. Difference of any two consecutive term equals to 5. D 5 हो गया. What we have to find out? We have to find out n. कौन सा टर्म नंबर? Which term number is 78? कौन सा टर्म 78 होगा? So we have to find out the term number. Put it in the formula. an equals to a plus n minus 1 into d. Put the value. an is 78 equals to a is 3 plus we have to find out n, so n minus 1 into 5. So 78 minus 3 equals to 5n minus 1. So 75 equals to 5n minus 1. n minus 1 equals to 75 upon 5. That is 15. n minus 1 equals to 15. n equals to 15 plus 1. So n equals to 16. It means
In this AP 16th term is 78. इस AP में क्या होगा? 16 टर्म क्या होगा? 16 टर्म होगा 78. Now question number 5. Find the number of term in each of the AP. AP में नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने हैं. AN दिया हुआ है, लास्ट टर्म 205. AN मान लें या L मान लें लास्ट टर्म. AP is given, तो A भी है A and B है D. हमारे पास A भी है और हमारे पास D भी है. B फाइंड आउट द N. तो फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें N फाइंड आउट करना है. बी सॉल्व जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4. 5 वाला क्वेश्चन हमें सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करना है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 6.1. Check whether minus 150 is the term of the AP. In the question number 6, question number 6, we have to find out AP is given and AP is 11, 8, 5, 2, ... We have to check minus 150. Check minus 150 is the term of AP. हमें चेक करना है कि माइनस 150 इस AP का टर्म होगा या नहीं होगा. इफ वी हैव गिवन एनी टर्म, अगर हमें कोई भी टर्म दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये इस गिवन AP का टर्म है या नहीं है. तो वी लेट nth टर्म ऑफ AP इज माइनस 150. हमने मान लिया कि इस AP का n टर्म माइनस 150 होगा. सो an equals to minus 150. A equals to first term is 11 and D equals to 8 minus 11 equals to minus 3. B find out n. In an AP, किसी भी AP में n is in नेचुरल नंबर. नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे? काउंटिंग में होंगे. इट इज नाइदर जीरो नहीं होगा, नॉर इट इज ए नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉट फ्रैक्शनल. ना नेगेटिव होगा ना फ्रैक्शनल होगा. ये टर्म होल में होगा, यानी नेचुरल नंबर होगा. इफ n फाइंड आउट करेंगे, अगर m नेचुरल नंबर आता है कोई भी, तो हम कहेंगे इट इज द टर्म ऑफ दैट AP. अगर n नेचुरल नहीं आता है, नेगेटिव आता है या फ्रैक्शन में आता है, तो हम कहेंगे इट माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ AP. तो माइनस 150 उस AP का टर्म नहीं होगा. लेट्स फाइंड आउट. an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वी लेट an इक्वल्स टू माइनस 150. हमने माना an माइनस 150 है. a is 11. we have to find out n minus 1 and d is minus 3. so minus 150 minus 11 equals to minus 3 and minus 1. minus 161 equals to minus 3 and minus 1. so we find out n 3 minus 3 and minus 1 equals to minus 161. Find out n minus 1 equals to minus 160 upon minus 3. n equals to 161 upon 3 plus 1. Solve out. 3 161 plus 3. n equals to 164 upon 3. Now check. 6 plus 4, 10 and 1, 11. Sum of the date is 11. So 11 is not divisible by 3. So it is not divisible by 3. Divide.
3 5 जा 15, that is 14. 3 4 जा 12, that's 54 2 upon 3. So n is not whole number. n never be in fraction. n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. हमारा n क्या आ रहा है यहाँ पर? फ्रैक्शन में आ रहा है. क्लियर? तो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी. n फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब -150 इस एपी का टर्म है ही नहीं. तो वी राइट हियर -150 is not the term of given AP. यानी -150 उस AP का टर्म है ही नहीं.